सम सेज मैरी मनी, ये तो याद आप करोगे कि भाई ये कौन सी सेंसरी है कौन सी मोटर है। नाम कैसे याद करोगे? उपटा फेगवा। ठीक है जी। चलो अब हम ना बेटा एक इसमें एक आपने बेटा यहां पे है बस बातें बातें मत करो। क्या कह रहे हो? हाय इतना मजेदार चैप्टर है। बस ये मैंने संडे तक खत्म कर देना है, ठीक है, क्योंकि ये तो खत्म हो जाएगा। सेंसरी भी तो है, आई और ईयर भी तो करना है ना। ठीक है, तो लोड़ी लोड़ी हो गई। अब तो कोई तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है ना कि भी अब हमने ये प्रैक्टिस करनी है वो करनी है। ठीक है, तो सैटरडे छुट्टी है, संडे छुट्टी है। थोड़ा थोड़ा टाइम लगाएंगे क्योंकि आई और ईयर में डायग्राम्स ज्यादा है। ठीक है, बाकी तो कम समझ आ ही जाएगा, डायग्राम्स बनाने का जो है वो ज्यादा है। क्रेनियल नर्व, उसके बाद है पार्ट ऑफ ब्रेन कनेक्टेड विद cranial nerve, और यहां पे है रिसेप्टर्स और इफेक्टर्स, किसके साथ कनेक्टेड है। बनाओ ये 3 कॉलम्स बनाओ जल्दी से। बना ली बेटा? आज भी दिशा नहीं आई? अच्छा उधर बैठी है, मैं पीछे वाली रो में दे दूं। ठीक है, हाँ जी चलिए। अब मुझे ये बताइए अवनीत, टेल मी ऑल्फैक्टरी नर्व कहां से, ध्यान से सोच के, सेंसरी नर्व है, कहां से ओरिजिनेट होगी? इज इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ब्रेन और इज इट फ्रॉम द रिसेप्टर? जल्दी से। मेरी बात ध्यान से सुनो। जो सेंसरी नर्व है, सेंसरी नर्व कहां से मैसेज लेके जाएगी? ब्रेन से नोज में या नोज से ब्रेन में? नोज से ब्रेन में, है ना। सेंसरी ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ठीक है, सो ये आपको पता होना चाहिए। सेंसरी यहां से, दैट इज कहां से अराइज हो रही है या किसको जोड़ रही है? ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम ऑफ नोज, और ब्रैकेट में लिख लो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, olfactory epithelium of nose, that is olfactory receptors, and it is joined to olfactory lobes of forebrain. Olfactory lobes of forebrain.
ठीक है जी। सेकंड आ जाती है बेटा ऑप्टिक नर्व, इट इज ऑल्सो सेंसरी, इट इज ज्वाइंड विद optic receptors in retina of eye to the optic center of cerebral cortex of forebrain. Optic center of cerebral cortex of forebrain. और यहाँ पे अगर रेड पेन है आपके पास तो यहाँ पे लिख लो पेराइटल लोब. It is not parietal but occipital. I'm sorry. Occipital lobe. Third is oculomotor. Oculo means eye muscles. It is motor nerve. It is motor. Oculomotor जो है, it is a motor nerve and it arises from forebrain and it supplies to extrinsic eye muscles. It supplies to extrinsic eye muscles, that is inferior oblique. कौन से मसल्स है? Inferior oblique muscles, superior rectus muscles, median rectus muscles and inferior rectus muscles. ठीक है जी. और ये जो मसल्स है, these helps in movement of eyeball. आईबॉल जब आप ऊपर देखते हो, नीचे देखते हो, देखो जरा ऊपर की छत की तरफ देखो, सिर मत घुमाओ, सिर्फ आंखें, है ना, नीचे की तरफ, है ना, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में. ठीक है, तो क्या घूम रहा है? आपके आई बॉल घूम रहा है. और आई बॉल घूमने में कौन से मसल्स हेल्प करते हैं? एक्सट्रिंसिक आई मसल्स हेल्प करते हैं. हो गया बच्चे, लिख लिया? Next is trochlear cranial nerve. Next is trochlear cranial nerve. हमें some says marry money. So it is also motor nerve and trochlear means pulley.
देखो ट्राइजेमिनल मैंने लिखवाया था, शायद क्या लिखवाया था, है ना। फोर्थ लिखो, ट्रोक्लियर लिखो जरा, ट्राइजेमिनल मत लिखो। ट्राइजेमिनल मैं बताऊंगी कौन सी है। ठहरो मैं बताऊं। हाँ, इसका बेटा ट्रोक्लियर का दूसरा नाम ही पैथेटिक है। फिर ठीक है, मैंने सोचा शायद फोर्थ पे ट्राइजेमिनल लिख लिया। ट्रोक्लियर और पैथेटिक एक ही बात है। और ये याद रखो, इट इज द स्मॉलेस्ट, रेड पेन से लिख लेना, स्मॉलेस्ट एंड थिनेस्ट क्रेनियल नर्व। It is the smallest and the thinnest cranial nerve. मोटर नर्व है, यहां पे लिख लो, it arises from floor of midbrain. It arises from floor of midbrain and it supplies to motor messages to superior oblique eye muscles. ऑक्यूलोमोटर जो थी वो इंफीरियर ओब्लिक थी, जबकि जो सुपीरियर ओब्लिक आई मसल्स है, दे आर सप्लाइड बाय ए सेपरेट नर्व, दैट इज ट्रोक्लियर नर्व। Fifth is trigeminal cranial nerve. Trigeminal cranial nerve. It is the largest cranial nerve. Largest cranial nerve. It is mixed and has 3 branches. ट्राइजेमिनल क्रेनियल नर्व जो है इसके 3 ब्रांचेस हैं, ऑफ्थेल्मिक, maxillary and mandibular. Ophthalmic, maxillary and mandibular. जो ऑफ्थेल्मिक है इट इज सेंसरी, लिख लो जल्दी से। ऑफ्थेल्मिक जो है इज सेंसरी, मैक्सिलरी सेंसरी है, मैंडिबुलर मिक्स्ड है। ऑफ्थेल्मिक सेंसरी, मैक्सिलरी सेंसरी, मैंडिबुलर मिक्स्ड। ऑफ्थेल्मिक स्मॉलेस्ट ब्रांच, and mandibular largest branch.
ऑफ्थेल्मिक जो है इट इज द स्मॉलेस्ट ब्रांच, मैंडिबुलर लार्जेस्ट ब्रांच. इट अराइजेस फ्रॉम द, क्योंकि सेंसरी है, सेंसरी नहीं बेटा, ये करो मोटर करो, आई एम सॉरी, मोटर. इट अराइजेस फ्रॉम द midbrain. It arises from midbrain and supplies to ये ऑप्थेल्मिक का बता रही हूं बेटा. It supplies to लैक्रिमल ग्लैंड्स. लैक्रिमल ग्लैंड जो हमारी टीयर ग्लैंड्स ऑफ आई है. इट अराइज फ्रॉम मिड ब्रेन एंड सप्लाइज टू लैक्रिमल ग्लैंड्स. जो मैक्सिलरी है, मैक्सिलरी मैंने बताया है सेंसरी है. इट अराइज फ्रॉम, मैक्सिला क्या होता है बेटा? मैक्सिला होता है अपर जॉ. ठीक है, जिसको नहीं पता वो ऊपर करके लिख लो, मैक्सिला मीन्स अपर जॉ. तो मैक्सिलरी जो है सेकेंड वाली, इट अराइज फ्रॉम अपर जॉ. लिख लो मैक्सिलरी का. इट अराइज फ्रॉम अपर जॉ, अपर गम्स, अपर गम्स, अपर जॉ, अपर गम्स and lower eyelids and lower eyelids. और कौन सा ब्रेन का पार्ट कौन सा इन्वॉल्व्ड है? pons varolai. Which part of the brain? pons varolai. ठीक है. और मैंडिबुलर ज्वाइंस pons विद, किसके साथ? क्योंकि मिक्स्ड है, मिक्स्ड में सेंसरी फाइबर्स भी होंगे, मोटर भी होंगे. विद किसके साथ? लोअर जॉ, लोअर टीथ and tongue. It joins pons with lower jaw, lower teeth, tongue and lower lip भी लिख लेना, and lower lip also. ठीक है बच्चे. नेक्स्ट आ जाता है बेटा, सिक्स्थ कौन सी है? एब्ड्यूसंस. मोटर, मोटर नर्व.
Arise from pons varoli. Arise from pons varoli. Supply to lateral rectus muscles of eye. Supply to lateral rectus muscles of eye. Next is facial. It is sensory. Facial जो है is sensory. Sensory है कि motor है? हाँ. Facial 7th ही हुई ना? Some says marry money, but my brother says bad business marry money. यही हुआ ना बेटा? फेशियल 7th हुई. Some says marry money but my brother. फेशियल जो है वो मिक्स्ड हुई, नॉट सेंसरी, इट इज मिक्स्ड. It connects pons varoli. It connects pons varoli with muscles of face, जो facial expressions को control करता है. Then salivary glands, muscles of face, salivary glands and taste buds. It connects pons varoli with muscles of face, salivary glands and taste buds. नेक्स्ट आ जाता है बेटा ऑडिटरी. इट इज सेंसरी. It arises from vestibule and cochlea of internal ear. सेंसरी है तो रिसेप्टर से अराइज होगी. इट अराइज फ्रॉम वेस्टिब्यूल एंड कॉक्लिया ऑफ द इंटरनल ईयर. And joins with lateral sides of pons varoli. Lateral sides of pons varoli. Next is glossopharyngeal.
It is mixed. Glosso means tongue, pharyngeal means pharynx. Glossopharyngeal. It connects medulla oblongata, with muscles of tongue and pharynx. Glossopharyngeal. It connects medulla oblongata with muscles of tongue and pharynx. नेक्स्ट आ जाता है बेटा वेगस नर्व. It is mixed nerve. It is the longest nerve. ये सबसे लंबी नर्व है और यहां पे स्टार डाल के it is the only cranial nerve which extends beyond cranium and innervates visceral organs. किसमें बेटा, पहले मुझे बता किसमें फर्क पूछ रहे हो आप, विसरल और वेस्टिजियल? बेटे वेस्टिजियल तो होता है नॉन फंक्शनल रिड्यूस्ड स्ट्रक्चर्स है, जैसे पिन्ना ऑफ ईयर है ना, इसका कोई ज्यादा फंक्शन नहीं. जो मसल्स ऑफ पिन्ना है, ठीक है, हम अपने कान खड़े नहीं कर सकते, बिठा नहीं सकते, ठीक है. वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है जिसका कोई फंक्शन नहीं है, रिमूव कर दो तब भी कोई फंक्शन, ये वेस्टिजियल है. और विसरल होता है विसरा. व्हाट इज विसरा? इट इज सिलोम, जो सिलोमिक ऑर्गन्स है, जो सिलोम में प्रेजेंट है, जो इनवॉलंटरी है, जिनके मूवमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं है. लंग्स हो गए, हार्ट हो गए, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन होगी, किडनीज हो गई, ये सब कौन से ऑर्गन्स है? विसरल ऑर्गन्स है, ठीक है. तो फंक्शनल, फुली फंक्शनल है, ठीक है बच्चों. तो मैंने आपको क्या बताया, ध्यान से मेरी बात सुनो, लिसन स्टूडेंट्स, कि मैंने बताया था कि एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इजंट इट? ठीक है. जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, ध्यान से मेरी बात दोबारा से सुनो, जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है जिसमें क्रेनियल नर्व्स आती है और स्पाइनल नर्व्स आती है, दे इनर्वेट्स द वॉलंटरी ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, जिनकी मूवमेंट हमारे कंट्रोल में है. और जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड एज विसरल नर्वस सिस्टम, ठीक है, बिकॉज इट इनर्वेट्स विसरल ऑर्गन्स. आपके स्टमक में फूड कहां पे जा रहा है, क्या आप उसको रोक सकते हो या चला सकते हो? कैन यू डू दैट? कि भी बस यहीं पे ही रहे, है ना, आगे कोलोन में ना जाए, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड ना जाए, अब बस ईसोफेगस में टिका रहे? हम नहीं ना कर सकते. क्या हम कर सकते कि हार्ट बीट रुक जाए, क्या किडनी के फंक्शंस रुक जाए? हम नहीं. वी कैन नॉट कंट्रोल दीज मूवमेंट्स, दीज आर इनवॉलंटरी मूवमेंट्स, ठीक है. तो जो हमारे सोमैटिक नर्व्स है, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल, ध्यान से मेरी बात सुनो, वेरी कंसेप्चुअल. जो सोमैटिक नर्व्स है, पहली बात तो दे इनर्वेट्स वॉलंटरी ऑर्गन्स, एंड जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है इट कंट्रोल्स विसरल ऑर्गन्स. ओके. जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है उसमें मैंने दो टाइप की नर्व्स बताई है, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स. जो क्रेनियल नर्व्स है वो किसको कंट्रोल करती है? ऑब्वियसली
वॉलंटरी ऑर्गन्स को, ठीक है। बट कौन से वॉलंटरी ऑर्गन्स को? क्रेनियम के यहां तक, शोल्डर से ऊपर ऊपर वाला जो रीजन है हमारा, ये सारा क्रेनियम है, ठीक है। अभी तक हमने जितनी भी नर्व्स बताई है, फेशियल मसल्स, टंग के मसल्स, लिप्स के मसल्स, आई के मसल्स, ईयर के मसल्स, यहीं तक ही बताया ना अभी तक सारी क्रेनियल नर्व्स में, ठीक है। तो सिर्फ एक वेगस नर्व है जो क्रेनियम से आगे जाती है, हमारे स्टमक में जाती है, हमारे हार्ट में जाती है। बाकी जितनी भी नर्व्स है, क्रेनियल नर्व्स, they are restricted up to here, they are restricted up to the cranium region, they control the voluntary activities of the cranial region। और जो स्पाइनल नर्व्स है क्रेनियम के नीचे, ब्रेन के नीचे क्या आ जाता है? स्पाइनल कॉर्ड आ जाती है ना नीचे। दे कंट्रोल वॉलंटरी ऑर्गन्स या वॉलंटरी एक्टिविटीज बिलो क्रेनियम। बिलो क्रेनियम से नीचे क्या आ जाती है? वॉलंटरी, हमारे लिम्स आ जाते हैं वॉलंटरी, और हमारी बॉडी वॉल आ जाती है, हमारे बैक के मसल्स है, ठीक है। तो जो स्पाइनल नर्व्स है वो किसकी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहे हैं? हमारी लिम्स की एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहे हैं और हमारी बॉडी वॉल की एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहे हैं। इज इट ओके? समझ में आई? तो सिर्फ एक वेगस नर्व है जो क्रेनियम से नीचे जा रही है और जो विसरल ऑर्गन्स में जा रही है, ठीक है। तो इट इज द ओनली वेगस नर्व, मैंने आपको बताया है, इट इज द ओनली क्रेनियल नर्व विच एक्सटेंड्स बियॉन्ड क्रेनियम एंड इनर्वेट्स विसरल ऑर्गन्स, ठीक है। लिख लो ये जल्दी से। लिख लिया बच्चों? और साथ में लिखो, इट कनेक्ट्स मेडुला ऑब्लोंगेटा, इट कनेक्ट्स मेडुला ऑब्लोंगेटा विद visceral organs such as stomach, such as heart, such as urinary bladder, etc. Accessory spinal. Next is accessory spinal. It is a motor nerve. It is a motor nerve which arise from medulla oblongata, which arise from medulla oblongata and, और इफेक्टर्स में लिख लीजिए मेडुला ऑब्लोंगेटा और फिर लिखिए सप्लाइज टू फेरेंक्स, सप्लाइज टू फेरेंक्स, लेरेंक्स, neck and shoulder. Pharynx, larynx, neck and shoulder. और लास्ट में आ जाता है बेटा हाइपोग्लॉसल। ग्लॉसा मीन्स टंग, हाइपो मीन्स नीचे, hypoglossal. It arises from side of medulla oblongata. It arises from sides of medulla oblongata and supplies to
lower side of the tongue. Tongue muscles. It applies to the lower side of the tongue muscles. ठीक है बच्चे, अब आप ये देख रहे हो कि फर्स्ट एंड सेकंड नर्व, ध्यान से देखो कौन से पार्ट ऑफ ब्रेन से जुड़ी हुई है। बॉक्स में ये लिख लेना है ध्यान से, अगर आप देखोगे तो पार्ट ऑफ द ब्रेन एसोसिएटेड विद क्रेनियल नर्व्स 1 and 2 फोर ब्रेन से एसोसिएटेड है, 3 and 4 मिड ब्रेन, 5 to 8 पॉन्स वेरुलाई, 9 to 12 मेडुला ऑब्लोंगेटा। जल्दी से बॉक्स में लिख लो पार्ट्स ऑफ ब्रेन connected with cranial nerves. हाँ जी बेटा, थर्ड एंड फोर्थ में जो दो ब्रांचेस है वो तो मिड ब्रेन से जुड़ी हुई है ना बेटा। जो फर्स्ट ब्रांच है वो फोर ब्रेन से लिखवाई है, देखो जरा। थर्ड है ऑक्यूलोमोटर, मैंने ऑक्यूलोमोटर में क्या लिखवाया, किससे ज्वाइंट है, फोर ब्रेन से? नहीं, फिर मिड ब्रेन ठीक कर लो, मिड ब्रेन ज्वाइंट विद मिड ब्रेन। थर्ड एंड फोर्थ दोनों मिड ब्रेन से ज्वाइंट है, ये ठीक कर लो। फिफ्थ वाली कौन सी थी, ट्राइजेमिनल। ट्राइजेमिनल में ऑप्थेल्मिक फोर ब्रेन से है, बी और सी जो है वो पॉन्स से है कि नहीं? ऑप्थेल्मिक मिड ब्रेन से, सॉरी ऑप्थेल्मिक मिड ब्रेन से, बाकी दोनों तो पॉन्स वेरोलाई से है। ठीक है, तो हम इन जनरल पॉन्स वेरोलाई से ही लिखेंगे जब तक स्पेसिफिक ना पूछा जाए। ठीक है,
चलिए जी नेक्स्ट आ जाते हैं फटाफट से। स्पाइनल नर्व्स हमने ऐसे नाम नहीं याद रख। अच्छा यहाँ पे एक और चीज स्टार डाल के लिखिए, फ्रॉग हैज 10 pairs of cranial nerves. It lacks accessory spinal and hypoglossal। बाकी सब 10 की 10 ह्यूमंस जैसी है। It lacks accessory spinal and hypoglossal cranial nerve। Next है spinal nerves। There are 31 pairs of spinal nerves। 31 pairs of spinal nerves मैंने पहले भी लिखवाई थी। 8 cranial, 12 thoracic, 5 lumbar। नीले पेन वाला नहीं करना, नीले पेन वाला नहीं करना है, सिर्फ लाल वाला और जो टिक किया हुआ है। लाल वाला, हाँ लाल से टिक किया है आपने। हाँ हाँ, और जो सिर्फ टिक किया है, जो काटे है वो नहीं। नीले वाला टिक किए हो उसको करना है, सिर्फ जो रेड पेन से टिक हाँ, किए है ना, हाँ। सिर्फ और सिर्फ वो। 5 लंबर, 5 सेक्रल एंड 1 कॉक्सीजियल। 8 cranial, 12 thoracic, 5 lumbar, 5 sacral and 1 coccygeal। और ये याद रखना है बेटा कि all spinal nerves are mixed nerves। और जब हमने पिछली बार स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर किया था तो हमने क्या किया था, दिस इज डोर्सल हॉर्न एंड दिस इज वेंट्रल हॉर्न। The sensory nerve fiber, the sensory nerve fiber enters through the dorsal horn of gray matter and motor nerve fiber and motor nerve fiber comes out through ventral horn of gray matter। है ना, ये हमने पिछली बार किया भी था, लिख भी लो दोबारा से। The sensory nerve fibers enters through dorsal horn of gray matter and motor nerve fiber comes out through ventral horn of gray matter of spinal cord।
ठीक है बेटा। उसके बाद हमने ये पॉइंट पहले भी लिखा हुआ है, अगेन दोबारा से लिख लो, पढ़ोगे 2 बार तो याद रह जाएगा। सेल बॉडीज ऑफ sensory neurons of spinal nerves are present, कहां पे मैंने बताया था, प्रेजेंट आउटसाइड central nervous system and is called as, ये सब सेल बॉडीज पड़ी हुई है, and is called as dorsal root ganglion. And is called as dorsal root ganglia या ganglion. Whereas cell bodies of the motor neurons, cell bodies of the motor neurons, ये देखो ये cell bodies नजर आ रही है, ये motor neuron है, are present in gray matter of spinal cord, are present in gray matter of spinal cord. This is spinal cord. This is vertebral column, as I had told you earlier also. ठीक है, ये आपने बनाया हुआ है, बस एक बार दोबारा से यहाँ पे लिख लो क्योंकि स्पाइनल नर्व्स है। तो राइट डाउन ईच स्पाइनल नर्व्स, each spinal nerve comes out from the vertebral column, comes out from the vertebral column through their respective intervertebral foramina, through their respective intervertebral foramina. But the spinal cord is shorter than, but the spinal cord is shorter than the vertebral column. Therefore, the lumbar sacral and coccygeal spinal nerve, lumbar sacral and coccygeal spinal nerve arise very close to each other, comma extends down and comes out through their own
इंटरवर्टिब्रल फोरेमिना, ये हमने पहले भी किया था, दोबारा से मैंने लिखवाया है ताकि स्पाइनल नर्व्स की बात बता सकूं। comes out through their own intervertebral foramina. Is it okay? So this is about the spinal nerves. और फिर नीचे लिख लो, spinal nerves innervates the, spinal nerves innervates the voluntary organs of the body below the head region. Below the head region. फिर स्टार डाल के लिखो, बट फ्यू ब्रांचेस ऑफ द स्पाइनल नर्व्स, बट फ्यू ब्रांचेस ऑफ द स्पाइनल नर्व्स स्टार डाल के लिखो, बट few branches of the spinal nerves extends, but few branches of the spinal nerves extends and forms part of autonomic nervous system, forms part of autonomic nervous system that joins with the visceral organs. 2 मिनट अपने हाथों को भी रेस्ट दो, ठीक है? और जो मैंने लिखवाया है वो एक बार रीड करो। हाँ जी जयप्रकाश। ना, कहाँ जा सकता है? कहीं भी नहीं, अभी नहीं कहीं जाना, अभी तो मैंने पढ़ाना है बेटा। बैठे रहा, अभी जो मैंने लिखवाया वो पढ़ ले फटाफट से।